All, I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to see drugs used in the malaria, pharmacology of drugs used in the malaria. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to see drugs treatment of malaria, and the chapter we are going to discuss from GPAT point of view, GPAT Niper DI Pharmacist point of view. So drugs used in the treatment of malaria, or you can say anti-malarial drugs. So we are discussing our antibacterial drugs, and this is a next part. So it is a 10th lecture on antibacterial drug. So that is today we are going to see anti-malarial drugs, drug treatment of malaria, right? So first of all, what do you mean by malaria? You should know what is meant by malaria. So malaria is a kind of parasite disease. This is caused by a parasite. You should know what is meant by malaria. Malaria is a infectious disease, and it is transmitted by a mosquito caused by a parasite known as a Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium. So there are three species of Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. So these are the species, and this parasite is carried or transmitted by mosquito to the humans. So in the mosquito, in the saliva of mosquito, in the saliva of mosquito, in the saliva of female Anopheles mosquito, in the salivary glands of female Anopheles mosquito, you have sporozoids. Sporozoids means that parasites are there. So when a mosquito will bite to a human, it will inject, or it will inject around thousands of sporozoids in the human blood, right? तो जैसे आपको एनाफेलिस, फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो जो है, और जब आपको वो होस्ट होता है, वो कैरियर होता है ना, वो कैरियर होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो विद द मलेरियल पैरासाइट. So malarial parasite is present as a sporozoids in the mosquito. So it when mosquito will bite to a human, it will inject around 3000 sporozoids in the human. So these sporozoids will remain in the blood for 30 minutes, and after that it will start dividing depending upon the incubation period for species. So this is known as a pre-erythrocytic stage or pre-erythrocytic seasoning. It is known as a pre-erythrocytic stage or pre-erythrocytic seasoning. So that sporozoids will enter in a liver. Liver में enter होता है, it will enter in the liver. In the liver they are multiplied. So in the liver they are known as a merozoids. Sporozoids when enter in the liver via blood known as merozoids. Now merozoids, these merozoids multiplies in the liver, and these merozoids again enter into the blood circulation. Some of the merozoids enters into blood circulation. Some of the merozoids
दे गेट्स डॉर्मेंट। कुछ मेरोजॉइड्स जो है लीवर में मल्टीप्लाई होके ब्लड में आते हैं, कुछ मेरोजॉइड्स वो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक सिजोगोनी और डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं इसको, वो डॉर्मेंट स्टेज में जाते हैं और दे रिमेन्स देयर फॉर सेवरल मंथ। मतलब ये अभी इनएक्टिव है, लेकिन 6 महीने के बाद में, 7 महीने के बाद में फिर से वो मलेरिया करेंगे। मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैप्स। So exoerythrocytic stage is responsible for the relapse, right? So sporozoites are injected in the humans. They are carried to a liver. In the liver, they are known as merozoites. Merozoites, they multiply in the liver, and after multiplication, some of the merozoites will again sent to the blood circulation. Some will go into dormant position, and that is known as the exoerythrocytic stage or exoerythrocytic syzogony. Now these merozoites will enter in the blood and it is known as the erythrocytic stage. अभी इनको बोलेंगे erythrocytic stage, right? So these merozoites in the blood, they get entry into the RBC. They get entry into the RBC. So initially they will form tropozoites as a singlet ring system, है ना? तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा उसको RBC में, उसको बोलते हैं tropozoites. After that it will transform into amoeboid tropozoites. Later it will divide, and dividing tropozoites, they are known as a blood seasons. Dividing tropozoites are known as a blood season. और इसके बाद में क्या होगा? There is a these tropozoites will release. They will break down the RBC. There is a breakdown the RBC. RBC will be broken down. RBC will be broken down, and several tropozoites will be released. They are okay. So some of them, and this stage breakdown of RBC is related with the fever, chills and rigor. आपको जो मलेरिया में अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट 4 आवर्स में जो आपका 4 आवर्स में अल्टरनेट जो आपका फीवर है ना, चिल्स मतलब ठंडा, रिगर्स ये आता है, स्टूपर. So all that is because of the breakdown of RBC, right? So these tropozoites will break down the RBC and release the breakdown product of your parasite as well as RBC breakdown product, and then releases the these tropozoites. Now these tropozoites, okay, so again they will get enter into, you know, again they will, some of these tropozoites go into a circulation known as the merozoites, and some of them develop into a gametes. These tropozoites develop into male and female gamete. So those who are having larger structure known as macrogametes, and some are having smaller structure known as microgametes. तो मैक्रोगैमेट को ही मेल बोलते हैं अपन, मेल एंड इसको बोलते हैं फीमेल. तो मैक्रोगैमेट्स नोन एज मेल गैमेट्स and female gametes is the microgametes. Now when mosquito will bite to a person again, है ना, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करके, दिस है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे आर सक्ड बाय मॉस्किटो इन द GIT. In the mosquito GIT, so there is a fertilization of this male and female gamete. There is a formation of zygote, and that zygote is converted to ookinete, and lastly oocytes, and then they will mature to form a sporozoites. So this is known as a life cycle of malaria. इसको life cycle of malaria बोलते हैं. And life cycle of malaria is divided into 2 types. First is known as a sexual stage, and second is known as a asexual stage. So, right. So what is asexual stage? Asexual stage is like this. So formation of that sporozoites, then merozoites, then tropozoites, male and female gametes. Up to this is known as a asexual stage that occurs in the human. तो humans में जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है उनको बोलते हैं asexual stage. And in the mosquito, जो मच्छर में होता है, in the mosquito, that is known as a sexual stage or gametic stage.
So malarial parasite, sexual and asexual cycle. Is that clear? I hope you got it. Right? Now again you can see over here. So a malarial parasite is present in the saliva of mosquito. Mosquito के saliva में ये parasite होते हैं, known as sporozoites. So after biting to humans, ये malaria parasite जो sporozoites है तो इंजेक्ट होता है ब्लड में, ब्लड से आ जाता है लीवर में, है ना. लीवर में क्या है कि it will multiply, known as merozoites, known as a pre-erythrocytic stage or pre-erythrocytic schizogony, है ना. So merozoites ये multiply होते हैं लीवर में. Some of the merozoites depending on the species, कौन से इन्फेक्शन है, मतलब प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेली है, प्लाज्मोडियम मलेरी है. Based upon that, some merozoites they get entered into the exoerythrocytic stage. जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में होता है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के यहाँ पे merozoites they will enter into the exoerythrocytic stage. They remain at dormant or they are known as a hypnozoites. They are known as a hypnozoites. Hypnozoites. ठीक है. Now they are responsible for the relapse. ये 6 महीने 4 महीने बाद में फिर से फेवरेबल जब आएगा कंडीशन तब ये मल्टीप्लाई होंगे, रिलैप्स करेंगे. ठीक है. Now merozoites they are released in the blood. When they are released in the blood, so they get entry into the RBC, known as erythrocytic schizogony. Known as erythrocytic schizogony. Erythrocytic schizogony. So they will multiply in the RBC, and after that they will rupture the RBC and they are released. Release okay. फिर से इसमें से कुछ लिवर में जाएंगे, है ना, और कुछ इसमें से मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो गैमेट्स. When again mosquito will suck the blood from infected person, these gametes are carried to a GIT of mosquito, and there is a sexual stage. Okay. Now drugs, है ना, drugs used in the malaria. These are the drugs which are used to prevent or which are used to treat or which are used to eradicate the malaria. So those drugs, कुछ drugs they are used to prevent the malaria. They are known as a prophylactics. Those drugs which are used to treat the malaria, they are known as a clinical, है ना, clinical curative. They are known as a clinical curative. Some drugs which are used to prevent the malaria known as a preventive, prophylactic, है ना. Then some drugs are used to treat known as a clinical curative, and some drugs are used to eradicate known as a radical curative. Radical curative. Prophylaxis में दो आता है, ट्रू prophylactics आता है एंड एक कैजुअल prophylactics आता है. तो ट्रू prophylactic ड्रग अभी अवेलेबल नहीं है. Casual prophylactics are there, and then after that clinical curative are there, then radical curative are there. So drugs, है ना, which prevent known as a prophylactics, drugs which treat known as a curative, and drugs which are used to eradicate known as a radical curative. ये तीन terms है. Now those drugs which will kill the malarial parasite in the liver known as a tissue schizonticides. Anti-malarial drug or drug which will kill the malarial parasite in the liver known as a tissue schizonticides, and anti-malarial drug or drug which kill the malarial parasite in the blood known as a blood schizonticides. Known as a blood schizonticides. Some anti-malarial drug also destroy the gametes. They are known as a gametocides. They are known as a gametocides. तो terms समझना important है इसमें. And right, we'll see the next part. So what is anti-malarial drug? To repair that malaria. So if you go in the history, ये malaria कब आया था? In the in the 17th century. Before the 17th century, there was no drug for the malaria. But after in the 17th century, initial like 1714. So in that period, only a cinchona bark was used to treat the fever caused by this. Okay, so cinchona bark was there. After that, it was
some preparations of cinchona bark, they were used. After that, first time quinine was isolated in a, I think in the 90s, initial part of 90s, 1919, 1920, etc. etc. So after that, chloroquine was synthesized. After that, meproquine was synthesized. After that, lot of drug came in the picture, right? So every year around few billions of people, they are infected by malaria, and 0.5% is the death rate of malaria. So it is a problem of many developing countries including India and the subtropical countries. जितने भी subtropical countries हैं, इंडिया, केनिया या फिर वहाँ पे जैसे साउथ अफ्रीका, so these are the countries suffering from malaria. Okay, and nowadays drugs are available. So malaria is caused by a parasitic protozoa known as a malaria is caused by a parasitic protozoa belonging to Plasmodium genus. Now infection is characterized by, जब मलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो आपको सिम्टम्स क्या आता है? Characterized by fever, rigor, anemia, splenomegaly, chills. The disease is transmitted to a man from a female Anopheles mosquito. A female Anopheles mosquito, which is a carrier for this parasites. So female Anopheles mosquito is a carrier for this disease. So there are four major types of Plasmodium. पहला है आपका Plasmodium vivax, second है Plasmodium falciparum. So malaria caused by Plasmodium falciparum is a very difficult to treat. So you can say it is a dangerous type of malaria. Then Plasmodium oval, Plasmodium malariae. So यहाँ पे there are four species of malarial parasite: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Right? Out of that, Plasmodium falciparum is a dangerous type of malaria. इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है. Now understand the life cycle of malaria. Understand the life cycle of malaria. So when individual is infected by malarial parasite, मतलब so when a carrier, a female Anopheles mosquito infected with the parasite, when it will bite to the human, so disease can be transmitted through female Anopheles to the human. Also can be transmitted through infected blood and also from mother to the fetus. तो मलेरिया आपको कैसे हो सकता है? मलेरिया आपको कैसे हो सकता है? तो मलेरिया होने के लिए है ना, मलेरिया होने की रीजंस क्या है? पहला है when female Anopheles mosquito, which is a carrier for this malarial parasite, when you got a bite from female Anopheles mosquito. Second, when a parasite containing the blood or infected blood, so blood infected with the malarial parasite, so infusion of that infected blood, or if mother is suffering from malaria, so she can transmit to a fetus. Now saliva of mosquito contain large number of sporozoites. जो saliva होता है mosquito का, उसमें large number of sporozoites, around thousands of sporozoites. These sporozoites, they are injected. Okay, they are injected in the blood and they develop through various stages. पहला स्टेज होता है pre-erythrocytic stage, pre-erythrocytic stage और pre-erythrocytic सीज़ोगोनी. इसको बोलते हैं pre-erythrocytic stage और pre-erythrocytic सीज़ोगोनी. इसको बोलते हैं hepatic cycle site 1 है ना. साइट 2 जो होता है वो exo-erythrocytic stage होता है. It is only present in the Plasmodium vivax, not in all other strains. So when sporozoites goes into circulation to the hepatic cell, no symptoms. जब आपका फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो बाइट करता है आपको, उसमें स्पोरोजॉइड्स इंजेक्ट करता है ब्लड में, वो ब्लड में जो स्पोरोजॉइड्स है वो ट्रैवल करके लीवर में जाते हैं एंड लीवर में क्या है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं. उस टाइम पे कोई आपको सिम्टम्स नहीं आता. तो ड्यूरिंग द sporozoid, when they are injected, they will go to the liver and they will start multiplying. Still you will not have any symptoms of malaria. Duration of this pre-erythrocytic stage
जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम का होता है 5 to 7 days, प्लाज्मोडियम ओवेली का होता है 8 to 30 days. Now infected reticuloendothelial cell is known as a टिश्यू सीजोन्स. जो लिवर के सेल इन्फेक्ट हो गए मेरोजॉइड से उसको बोलते हैं टिश्यू सीजोन्स, which releases thousands of मेरोजॉइड again in the blood. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वहां से thousands of मेरोजॉइड्स रिलीज होंगे ब्लड में. नाउ ब्लड में जब आएंगे तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. मेरोजॉइड्स they will invade the RBC, they will come to the RBC, they will go into RBC, they multiplies, and now at this stage they are known as erythrocytic C zones, which causes the rupture of RBC. They will multiply in the RBC and after that they will rupture the RBC and release the thousands of merozoites again. Now this is a periodic release. ये क्या है कि periodic release होता है 4 hours के बाद में, 5 hours के बाद में. This is a periodic release and that is associated with the paroxysm of fever and chills. इसमें क्या है कि आपको जब भी वो आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा आपको फीवर आएगा और आपको अल्टरनेट साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स ट्रिगर. तो साइकिल ऑफ इन्वेड, मल्टीप्लाई एंड रिलीज दैट विल कंटिन्यू. ये इन्वेड करेगा आरबीसी को, मल्टीप्लाई करेगा और रिलीज करेगा. ये मल्टीपल साइकिल्स चलते रहते हैं. ठीक है, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट. अगेन नाउ डेवलपमेंट ऑफ asexual forms of this parasite. So in the RBC they will multiply and they will release the merozoites again, but some of them they are differentiated into macro and micro gametes. So merozoites they are divided into macro gametes मतलब male gametes and micro gametes मतलब female gametes, which and these female gametes they are sucked into mosquito because of the mosquito biting. तो अगर दूसरा कोई मच्छर आपको बाइट करता है फीमेल एनाफिलिस तो ये वहाँ से सक हो जाता है और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो ओनली. फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स occur in the mosquito, which results in the formation of zygote. Zygote invade the GIT of mosquito to form oocytes, which contain again thousands of sporozoids, which will reach to a saliva and again अगर दूसरे आदमी को बाइट किया तो वहाँ पे ये स्पोरोजाइड्स इंजर करेगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम oocytes rupture and releases the sporozoids which reaches to the saliva of mosquito. और यही मॉस्किटो ने अगर दूसरे किसी ह्यूमन को किस किया तो वहाँ पे फिर क्या होगा, स्पोरोजाइड्स रिलीज होंगे, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. Now this is the cycle of Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, है ना. Plasmodium malariae has a slight different exoerythrocytic stage is absent in the Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum में क्या है, exoerythrocytic stage नहीं होता है, that's why relapse does not occur with the Plasmodium falciparum infection. ठीक है, ये हो गया आपका life cycle of malaria. Now we'll see the drugs used in the malaria. Now classification of drugs used in the malaria or classification of anti-malarial drugs. ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन आप क्लासिफिकेशन से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हो. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-मलेरियल ड्रग्स. So first is the cinchona-alkaloids. So they are classified based upon the chemistry. Also they are classified based upon the depending on the use. They say prophylactic, curative, suppressive, and depending on the use, depending on the chemistry. Also depending on the their depending on their source also, right? So cinchona-alkaloids. In that you have quinine and quinidine. So questions आया था GPAT में. Quinine and quinidine they are the dash of each other. Quinine and quinidine they are the stereoisomers of each other. आप याद रखना है आपको, they are the stereoisomer of each other. Quinine and quinidine they are the stereoisomers of each other. Then
क्विनोलिन डेरिवेटिव, इसका ही डेरिवेटिव है क्विनोलिन डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे भी इसमें भी दो आता है, दो नहीं तीन आता है इसमें। तो पहला आता है 4 अमाइनो क्विनोलिन, सेकंड आता है 8 अमाइनो क्विनोलिन, इसके ही ऊपर क्वेश्चन आता है। थर्ड आता है क्विनोलिन मिथेनॉल, क्विनोलिन मिथेनॉल, है ना। तो 4 अमाइनो क्विनोलिन कौन है? तो एग्जांपल्स ऑफ 4 अमाइनो क्विनोलिन, तो क्लोरोक्विन एंड अमोनिया क्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, देन पायरोनेरिडीन, पायरोनेरिडीन। तो दिस इज अ न्यू ड्रग डेवलप्ड बाय चाइना, ये चाइना ने नया ड्रग डेवलप किया है पायरोनेरिडीन, है ना। लुमीपेंट्रिन भी चाइना में ही बना है, लुमीपेंट्रिन में से, है ना। 4 अमाइनो क्विनोलिन, क्लोरोक्विन, अमोनिया क्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड पायरोनेरिडीन। Now 8 amino quinoline, in that you have primaquine, tefloquine and buloquine. So these are the primaquine, tefloquine, buloquine. So 8 amino quinoline derivative. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है, which one is a 4 amino quinoline derivative, which one is not a, है ना, which one is a 8 amino quinoline derivative. Then quinoline methanol, so example is a mefloquine and lumipentrin, हेलोफेंट्रिन, दे आर अमाइनो अल्कोहल डेरिवेटिव, ये एक अलग क्लास है अमाइनो अल्कोहल डेरिवेटिव। लुमीपेंट्रिन एंड हेलोफेंट्रिन, सो लुमीपेंट्रिन इज आल्सो डेवलप्ड बाय योर चाइना, है ना। तो नेक्स्ट होता है एंटी फोलेट ड्रग और फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। इसमें पहला है बाइगोनेट्स, तो एग्जांपल इज प्रोगोनिल, सेकंड है आपका डायहाइड्रो, रिमेनिस आपका एग्जांपल है पायरिमिथामाइन, ये तो ऑलरेडी अपना सल्फोनामाइड्स में हो चुका है। एंड थर्ड है उसमें सल्फोनामाइड्स, तो cotrimazole and sulfadoxine, they are longer acting, they are used in the malaria, right? But nowadays it is not used. Then है ना, ये हो गए 3 का। फोर्थ क्लास इज artemisinin and related compounds. So artemisinin compound was isolated from Artemisia annua, a herb from China again. तो इसमें sesquiterpene lactone, इसमें आता है artemisinin, artesunate, artether and artemether। artemisinin, artether, artemether, artesunate। देन अमाइनो अल्कोहल में आता है हेलोफेंट्रिन, लुमीपेंट्रिन, तो मैंने तो बोल दिया आपको। एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं इसमें, सम डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन एंड एटोवाकोन। एटोवाकोन इज नॉट एंटीबायोटिक बट एंटीमलेरियल ड्रग होता है एटोवाकोन। सो अगेन वी विल सी द क्लासिफिकेशन, डोंट वरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। तो पहला क्लास है आपका, देखो फर्स्ट क्लास इज नथिंग बट द सिंकोना अल्कोलाइड। सिंकोना अल्कोलाइड कौन है? क्विनिन एंड क्विंडीन, क्विनिन एंड क्विंडीन सिंकोना अल्कोलाइड्स, दैट इज द फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास इज नथिंग बट द 4 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, 4 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, that is a chloroquine, ammonia queen and piperquine। examples नए याद रखो, ammonia queen, chloroquine, piperquine। then again third class is nothing but the 8 amino quinoline derivative, third class is nothing but the 8 amino quinoline derivative, primaquine, tefnoquine and buloquine। देन फोर्थ क्लास इज नथिंग बट द क्विनोलिन मिथेनॉल, यहाँ पे फोर्थ क्लास क्या है आपका? क्विनोलिन मिथेनॉल। एग्जांपल इज अ मेफ्लोक्विन, क्विनोलिन मिथेनॉल एग्जांपल इज अ मेफ्लोक्विन। नाउ फिफ्थ क्लास इज नथिंग बट द फिफ्थ क्लास इज नथिंग बट द दिस इज अ डाई अमाइनो pyrimidine, फिफ्थ क्लास। तो पायरिमिथामाइन इज द एग्जांपल। अभी सिक्स क्लास इज नथिंग बट द बाइगोनाइट, तो उसका एग्जांपल है आपका प्रोगोनिल और साइक्लोगोनिल। सेवंथ क्लास है आपका सल्फोनामाइड्स, इसमें सल्फोडोक्सिन वगैरह आएगा आपका सेवंथ क्लास, सल्फोडोक्सिन, सल्फोमिथोपायराजिन एंड डेप्सोन। सिक्स्थ क्लास है आपका ना, सॉरी
सेवन्थ क्लास हो गया सल्फोनामाइड, 8th क्लास है आपका है अमाइनो अल्कोहल, इसमें आपका हेलोफेंट्रिन, लुमिफेंट्रिन, हेलोफेंट्रिन एंड लुमिफेंट्रिन, 8th क्लास हो गया। 9th क्लास इज नथिंग बट द नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव, और इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। 9th क्लास नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव, दैट इज नथिंग बट द एटोवाकोन। 10th क्लास क्या है आपका सिस्क्विटरपिन लैक्टोन, 10th क्लास इज सिस्क्विटरपिन लैक्टोन, सिस्क्विटरपिन लैक्टोन। और इसमें क्या आता है आर्टिमिसनिन, आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर एंड आर्टिनोलोन। एंड 11th क्लास है आपका नेप्थापिरिडीन डेरिवेटिव, उसमें पायरोनेरिडीन, एंड लास्ट क्लास है आपका 12th क्लास एंटीबायोटिक्स, उसमें टॉक्सिसाइक्लिन, लिंडामाइसिन ये आता है। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। और इसमें 4 अमाइनोक्विनोलिन कौन है, 8 अमाइनोक्विनोलिन कौन है, इसके बाद में आपका है ना नेप्थाक्विनोन कौन है, अमाइनो अल्कोहल के एग्जांपल्स क्या है ना, ये क्वेश्चन आपको नेप्थापिरिडीन कौन है, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं। राइट, नाउ विल सी द इंडिविजुअल ड्रग्स। अगेन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लास इज ट्रू कैजुअल प्रोफिलैक्टिक्स। फर्स्ट क्लास क्या है, ट्रू कैजुअल प्रोफिलैक्टिक्स। ट्रू कैजुअल प्रोफिलैक्टिक्स, प्रोफिलैक्टिक्स मतलब दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट, these drug will destroy the sporozoites before their invasion in the liver or hepatic reticuloendothelial cell. Yeah. So true casual prophylaxis means they will prevent the entry of sporozoites in the liver. So no such drug is available, है ना, no such drug is available, ना। then आता है second class casual prophylactic, कौन सा casual prophylactic, this one is a casual prophylactic second class. So these drugs, they will prevent the maturation and they will destroy the sporozoites in an infected liver cell or in an infected hepatic cell and prevent their invasion in the RBCs, है ना। तो casual prophylactics क्या करेंगे, they will destroy sporozoites in the liver and they will prevent the entry of that sporozoite in the RBC. They are also known as the primary tissue schizonticides. Casual prophylactics are also known as a primary tissue schizonticide. Primary tissue schizonticide. So example is a primaquine, pyrimethamine, and proguanil. ये examples है primaquine, pyrimethamine, and proguanil. So true casual prophylactics, no drug available. Casual prophylactics, they will destroy the sporozoites in the liver, and then suppressive. So these drug inhibit the erythrocytic schizogony, मतलब आरबीसी में जब आएगा तो वहां पे मारेगा। तो these drug will inhibit the erythrocytic schizogony and prevent the RBC from rupturing, they are known as a suppressive. Example क्या है, quinine, 4 aminoquinolines, artemisinin, proguanil, pyrimethamine, tetracyclines. They are known as suppressive drugs. They will prevent the rupturing of RBC and prevent the symptoms of malaria. Now, fourth class is radical curative. Radical curatives. So radical curative मतलब eradication of both exoerythrocytic and erythrocytic schizogony. मतलब total eradication of malarial parasite from the body is known as a radical curative. The total eradication of malarial parasite from the body known as a radical curative. For example, for Plasmodium falciparum, this is done with the suppressive drugs only. जो suppressive जो है आपके quinine, aminoquinolines, artemisinin, ये Plasmodium falciparum के लिए होते हैं। But for Plasmodium vivax, जैसे मैंने बोला इसका एक्सोइरोथ्राइटिक स्टेज होता है, इसके लिए है आपका प्राइमाक्विन एंड प्रोग्वानिल। नाउ गैमेटोसाइटोसिडल, तो दे विल सप्रेस द गैमेट्स
suppressive like chloroquine, quinine, artesunate, they are effective against the gametocytes. Primaquine is highly effective against the gametocytes of all species. So those drugs which kill the sporozoites in the liver, known as a casual prophylactics. Those drugs which kills the sporozoites in the RBC, known as suppressive और clinical, इसको suppressive और clinical curative बोलते हैं, clinical curative और suppressive. Then radical curatives मतलब complete eradication of that malarial parasite. Gametocytocidal मतलब gametes को भी डैमेज करने वाली. तो एग्जाम्पल्स याद रखना है कैसे भी करके, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते. ठीक है, चलो नेक्स्ट. तो अगेन यू कैन सी ओवर हियर, तो है ना, अगेन यू कैन सी ओवर हियर, सपोज दिस इज अ मॉस्किटो. क्या है आपका मॉस्किटो? तो इन द मॉस्किटो, in the saliva of female Anopheles mosquito, so there are malarial parasite known as sporozoites. So when this mosquito will bite, so will release thousands of sporozoites in the blood. Now from the blood, ये जो sporozoites है, so they will go to the liver. In the liver they will multiply. In the liver they are known as merozoites. So that is known as a pre-erythrocytic schizogony. अभी यहाँ पे लीवर में ये मल्टीप्लाई होंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक schizogony, है ना. एंड सम ऑफ देम मल्टीप्लाई होने के बाद में सम ऑफ देम विल गो इनटू अ डोर्मेंट पोजीशन known as exo erythrocytic schizogony. Some of them are released again in the blood. Okay, they will enter into RBC, है ना, known as erythrocytic schizogony. After that they will multiply and rupture the RBC, and they will release again male and female gametes. So when this mosquito again suck the blood from human, these gametes goes into the mosquito. In the GIT there is a fertilization, zygote formation and maturation, and again sporozoites formation, right? That is known as a सेक्सुअल साइकिल, है ना. तो ह्यूमस में ए सेक्सुअल स्टेज होता है और मॉस्किटो में सेक्सुअल स्टेज होता है मलेरियल पैरासाइट का. ठीक है. नाउ अगेन, तो ड्रग्स विच किल्स द स्पोरोजोइट्स इन द लिवर नोन एज अ प्राइमरी टिश्यू सिंथेसाइड्स. एग्जांपल इज प्राइमाक्विन, प्रोगोनिल, टेट्रासाइक्लिन. ड्रग्स विच किल्स द एक्सोइरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट नोन एज अ, है ना, known as a example है primaquine, only drug which is effective in a exoerythrocytic stage. Now drugs which kill the parasite in the when they are in a RBC known as a suppressive or clinical curative. Chloroquine, primaquine and quinine. Right. Primaquine, quinine and chloroquine, they will destroy the gametes. Gametocytocidal. Then drugs which will destroy sporozoites in the RBC, they are known as a radical curative. So example is a chloroquine, quinine, mefloquine, haloperidol, artemisinin, mepacrine, atovaquone, sulforoxine, pyrimethamine combination, proguanil and tetracycline. They are known as a clinical curative. Clinical curative or also known as suppressive. They are known as these are known as gametocytocidal. They are known as a primary, they are known as casual prophylactics. So again, this is a malarial parasite and cycle of malaria. Now we'll see the individual drugs. पहला है quinine. So anti-malarial drugs individual. The first one is a quinine. So it is a alkaloid obtained from cinchona. So alkaloid obtained from cinchona, it is a
सिजोंटिसाइडल, ये सिजोंटिसाइडल होता है, used only for suppressive radical filtering and has no effect on sporozoites and pre-erythrocytic stage and persistent tissue form. मतलब ये एक्सोइरेथ्रोसाइटिक स्टेज और इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में इसका, प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज और एक्सोइरेथ्रोसाइटिक स्टेज में इसका कोई रोल नहीं है. ओनली सिजोंटिसाइडल एट अ व्हेन स्पोरोजॉइट्स आर इन अ आरबीसी. लोकल एक्शन क्या है इसका? इट इज अ लोकल एक्शन आल्सो नोन एज जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है. इट विल डिप्रेस द एंजाइमेटिक प्रोसेस एंड इनहिबिट द phagocytosis and growth of the fibroblast. It is also local anesthetic and causes the pain and reactive fibrosis. GIT के ऊपर क्या एक्शन है? Because of the intense bitterness ये क्या करता है? nausea, vomiting and epigastric pain का. Cardiovascular system के ऊपर ये still suppressant होता है and it is used in the cardiac arrhythmia. Quinidine is a isomer of quinine, है ना. तो miscellaneous action में क्या है? It is also mild analgesic, antibiotic, uterine, smooth muscle stimulant and skeletal muscle relaxant. Absorption, distribution, metabolism, elimination, completely absorb होता है, metabolized by liver and excreted through kidney, है ना. Adverse drug reaction important है, क्वेश्चन बहुत बार इसके ऊपर आ चुका है. मेन है पहला एडवर्स ड्रग रिएक्शन सिंकोनिज्म, है ना. सिंकोनिज्म के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिन इज अ सिंकोनिज्म, है ना. तो माइल्ड सिम्टम्स लाइक रिंगिंग इन ईयर्स, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया. रिंगिंग इन ईयर्स, नॉशिया, हेडेक, सीवियर सिम्टम्स लाइक टिनिटस, देन डीपनेस, वर्टिगो, blurred vision, disturbance in the color vision, photophobia, skin rash, cold and cyanotic skin. They are the symptoms of synchronism caused by quinine and chloroquine also, है ना. Then second होता है idiosyncratic reaction. Cardiovascular toxicity. Quinine can produce a hypoglycemia. क्यों hypoglycemia करता है? Stimulate the beta cells of Langerhans to release the insulin. Third adverse effect is black water fever, important, characterized by acute intravascular hemolysis, hemoglobinuria, then fever. Blood transfusion is very important to maintain the normal hemoglobin. Black water fever में उसको blood transfuse करना पड़ता है to maintain the hemoglobin. Hemoglobin का normal value कितना होता है? In a male 45 to 55%, in the male 45 to 55%, in the female 37 to 47%. हेमोक्रेट मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ आरबीसी पर लीटर. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके. तो यूजेस क्या है इसके? यूज्ड इन द मलेरिया, मायोटोनिका, कॉग्निटा, है ना, एंड मसल क्रैम्प्स, मतलब मसल स्पाज्म और इसमें यूज करते हैं मसल क्रैम्प्स. तो ये हो गया आपका क्विनिडीन. नेक्स्ट विल सी क्लोरोक्विन. क्विनिडीन का मैकेनिज्म क्या है? एज लाइक अ क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन में कवर हो जाएगा. तो नेक्स्ट ड्रग इज अ क्लोरोक्विन. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? तो मलेरियल पैरासाइट क्या करता है? आपके आरबीसी में जाके आरबीसी को मल्टीप्लाई होता है, ब्रेक डाउन करता है. तो मलेरियल पैरासाइट विल ब्रेक डाउन द हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन एंड फ्रॉम ग्लोबिन प्रोटीन इट विल यूटिलाइज अमाइनो एसिड्स. ग्लोबिन का ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड यूज करता है, लेकिन जो हीम रिलीज हुआ है वो टॉक्सिक होता है पैरासाइट को. सो मलेरियल पैरासाइट विल डाइजेस्ट द हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट दैट अमीनो एसिड टू द एसिडिक वोक्यूल्स और देयर लाइसोजाइम टू यूटिलाइज द अमीनो एसिड. नाउ रिलीज द हीम इज अ हाईली टॉक्सिक टू द मलेरियल पैरासाइट. जो हीम रिलीज हुआ है वो टॉक्सिक होता है, बट मलेरियल पैरासाइट विल कन्वर्ट दैट हीम इनटू हिमाजोइन. सो मलेरियल पैरासाइटिक एंजाइम हीम पॉलीमरेज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक हिमाजोइन.
मतलब मलेरियल पैरासाइट हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है, हीम अलग करता है, ग्लोबिन अलग करता है। ग्लोबिन को उसका ग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड लेके जाता है एसिडिक होक्यूल में। क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन इज अ काइंड ऑफ बेसिक ड्रग, so it will concentrate into acidic molecules and will combine with the that hemazoin and inhibit the heme polymerase enzyme, and you know that will damage the malarial parasite cell membrane. So chloroquine is a basic drug get concentrated into acidic lysozyme or ocules that binds to the liberated heme. Heme quinoline complex get incorporated into growing polymer chain and interrupt the heme polymerization. Heme polymerization नहीं होने देगा. This complex causes the oxidative damage to the membrane of malarial parasite. Digestive proteases as well as biomolecules of parasite. Antimalarial activity क्या है इसका? Chloroquine is active against. It kills the asexual exoerythrocytic forms of Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax also effective against the gametes of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale. It has no effect on sporozoids in a pre-erythrocytic stage and persistent tissue form of Plasmodium falciparum now got a resistance to the chloroquine. So also effect in the giardiasis, tiniasis, and extraintestinal amoebiasis. Chloroquine and amodiaquine are the safe drug in the pregnancy. ये safe होते हैं pregnancy में. But it has a depression on a CVS, cardiovascular system को depress होता है. Absorption, distribution, metabolism, elimination. तो क्विनिन का भी मैकेनिज्म क्या है? क्विनिन का मैकेनिज्म सेम लाइक अ क्लोरोक्विन है ना, सेम लाइक अ क्लोरोक्विन. तो rapidly absorb, completely absorb from GIT, then binds to the plasma protein, then metabolized in the liver and converted into active metabolite known as the 4-hydroxychloroquine, which is also another drug. 4-hydroxychloroquine is also another drug. Yeah. It has the largest volume of distribution, that is a 1600. 1600 ऐसा है, 1600. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है 3 GPAT. तो it has the largest volume of distribution. Chloroquine has the largest volume of distribution. Okay, so I will correct it. More than 1300 liter, है ना, there is a volume of distribution of more than 1300 liter. Next we'll see adverse drug reactions of chloroquine. Chloroquine के adverse drug reaction, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है adverse drug reactions of chloroquine. So it is a relatively safe drug, but common adverse effect आता है जैसे nausea, vomiting, diarrhea ना. Serious adverse effect कौन से है? Serious adverse effect include photosensitivity, pigmentation, exfoliative dermatitis. Long term effect of chloroquine result in the bleaching of scalp hair and eyebrows and eyelashes. जो आपका eyebrows है, eyelashes है, उसका वहाँ पे bleaching हो जाएगा, मतलब वो है ना brownish हो जाएंगे, black नहीं रहेंगे. Again CNS symptoms क्या है? CNS के ऊपर it can produce psychotic symptoms. Psychotic episode, seizures, neuropathy, ototoxicity is uncommon. Cardiovascular system में ECG abnormalities करेगा. Prolonged use of
क्लोरोक्विन रिजल्ट इन द ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनल डैमेज, रेटिना को बाइंड करता है। मेलानोसाइट जो होते हैं, मेलानिन पिगमेंट, इसको बाइंड करता है। इट इज यूज्ड इन द, okay, remember first line drug in the treatment of malaria, hepatic amoebiasis, giardiasis, clonocinus, Chinese liver fluke infection, rheumatoid arthritis, discoid lupus, disseminated lupus erythematosus. It is also used to control the lepra reaction because it is also anti-inflammatory. ये anti-inflammatory भी होता है, तो used to control the acute lepra reactions. ठीक है, so mechanism of action of chloroquine. So hemoglobin is digested by malarial parasite and converted into globin and heme. So globin is used by parasite for amino acid. Now released heme is a toxic to the parasite. Now released heme is toxic, so malarial parasite has one mechanism that it will convert toxic heme into non-toxic heme as well by the enzyme hemopolymerase. Now that enzyme is inhibited by chloroquine, quinine and mefloquine. ये तीनों का mechanism एक ही, right? So casual prophylactic जो होते हैं, they will act on a sporozoites of liver. Radical curative, they will kill the both sporozoites of liver as well as sporozoites present in the blood, right? Blood sensiticides, they will kill only sporozoites of the RBC. Gametocytocidal, they will kill the male and female gametes of malarial parasite. Next one is a hydroxychloroquine, है ना? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये ड्रग रिसेंटली कोरोना के पीरियड में भी ये इट वाज यूज्ड एज अ प्रोफिलैक्टिक ड्रग फॉर COVID-19, but actually it is a anti-malarial drug, hydroxychloroquine, which is an active metabolite of your chloroquine. There is a less toxicity than chloroquine, is less toxic than chloroquine. Other properties, adverse reactions are similar to the chloroquine, right? So it was tried for prophylaxis of COVID-19. Then amodiaquine is there. Amodiaquine, it can cause hepatitis and agranulocytosis as an adverse effect. Rest of the things are similar to chloroquine. ये Plasmodium falciparum resistant जो है, तो malaria which is resistant to the chloroquine, Plasmodium falciparum malaria resistant to chloroquine, इसमें यूज होता है, but that is sensitive to amodiaquine. Amodiaquine is used in the chloroquine resistant Plasmodium falciparum. Then aminopyroquine is also new drug similar to amodiaquine. Then pyronaridine, new drug. It is a promising antimalarial activity, structure similar to amodiaquine developed in the China. Primaquine, it is effective in the persistent tissue form also. मतलब जो exoerythrocytic stage होता है उसमें भी ये effective है. So it is also effective in the persistent tissue form of Plasmodium vivax, then pre-erythrocytic stage as well as gametes, sexual forms, gametes of the all species of malaria which are causing malaria to humans. It acts by generating a toxic reactive species and interfere with the electron transport chain of the parasite. Primaquine. Adverse reaction क्या है इसके? epigastric distress, abdominal cramps, mild anemia. It can produce a hemolysis in the patient with the deficiency having glucose 6-phosphate dehydrogenase. Tafenoquine is a longer acting analog, more potent than primaquine. Next again mefloquine, इसका mechanism similar to the chloroquine. It is a quinidine methanol derivative similar like a chloroquine, act on a erythrocytic stage.
highly effective against the Plasmodium falciparum in the single dose. It is only single dose therapy, only antimalarial drug which is a single dose, only antimalarial drug which is a single dose therapy. Quinine and mefloquine should not be used in a combination. So quinine, mefloquine, pharmacology, ये combination में नहीं use करना है because that can result in the cardiotoxicity. It has no action on the persistent tissue form. Adverse reactions क्या है इसके? GIT के ऊपर nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, neuropsychiatric disturbances can cause hallucination, sleep disturbances. In some cases can cause psychosis, toxic encephalopathy, convulsions कर सकता है, cardiovascular depression कर सकता है, teratogenicity and skin reactions. It should not be used in the pregnant woman and lactating mothers. Pregnant woman में lactating mothers में use नहीं करना है mefloquine. Now next drug is a haloperidol. It is a new drug again developed by China. So it is a phenanthrene methanol discovered by Fortis. Haloperidol is discovered by Fortis. That is a CDRA, Central Drug Research Institute, Lucknow. So discovered by effective against the chloroquine, pyrimethamine, quinine resistant strains of malaria. Mechanism is unknown. Major metabolite of this haloperidol is major metabolites of haloperidol is disbutyl haloperidol, which is a longer acting. तो lumefantrine जो है वो चाइना ने डिस्कवर किया है, haloperidol जो है वो फोर्टिस और CDRI, Central Research Institute, CDRL, Central Drug Research Institute, लखनऊ, उसने किया है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? नॉशिया, वोमिटिंग, डायरिया. मेजर डिसएडवांटेज क्या है? QT प्रोलॉन्गेशन, QT इंटरवल, ECG में चेंजेस करता है, अरिथमिया प्रोड्यूस करता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया. इट इज यूज्ड एज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ contraindicated along with the quinine, cinchonine, chloroquine, antidepressant. Lumefantrine is discovered by China, used in the combination with artemether, similar to haloperidol. Well tolerated, effective in the complicated falciparum infection. Proguanil, कौन सा guanil? Proguanil. Next the way proguanil. Mechanism of action क्या है? Converted into cyclic derivative, cyclic ring triazine metabolite, इसको बोलते हैं cycloguanil. Proguanil का active metabolite कौन है? Cycloguanil. So it is converted into cycloguanil in the human body, binds with the enzyme dihydrofolate reductase thymidate more strongly in a malarial parasite than the human, and inhibit the formation of folic acid and inhibit the DNA synthesis, which will prevent the completion of schizogonine. Sulfonamides also have a synergistic action with the proguanil. ये इफेक्टिव सिजोनिटिसाइड होता है in case of Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Action is slower than a 4-aminoquinoline. It is effective against the primary erythrocytic forms of Plasmodium falciparum. Prevent the development of gametes in the GIT oval of the mosquito. No action on a persistent form of Plasmodium vivax. Adverse drug reactions क्या है इसके? GIT disturbances, stomatitis, mouth ulcers can develop. Large dose can cause depression of myocardium, megaloblastic anemia, decreasing the RBC. इसका यूज है कैजुअल प्रोफिलैक्सिस एंड सेफ इन द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट ड्रग है आपका आर्टिमिसिनिन. आर्टिमिसिनिन ये भी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चाइनीज herb known as Artemisia annua, and after that lot of derivative of artemisinin like artemether, alpha beta artemether, and they were developed as an antimalarial drug. आर्टिमिसिनिन क्या है देखेंगे आप. पहले पायरेमिथामाइन. पायरेमिथामाइन इज अ डायहाइड्रोफोलेट reductase inhibitor. आपने देखा है पायरेमिथामाइन इज अ डायहाइड्रोफोलेट reductase inhibitor to the malarial then mammalian. Effective against the
erythrocytic forms of all type of malaria, effective against the pre-erythrocytic form of Plasmodium falciparum, used to prevent the maturation of fertilized gametes within the mosquito, effective against the exoerythrocytic form, cross resistance to the pyrimethamine and progonil. एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके रेयर होते हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस। यूज किया है मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, पॉलीसाइथेमिया वगैरह। नाउ आर्टिमिस्निन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है मैकेनिज्म के ऊपर। तो आर्टिमिस्निन एंड रिलेटेड कंपाउंड लाइक आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर, आर्टिथर, ये क्या है, ऑप्शन फ्रॉम चाइनीज हर्ब आर्टिमिसिया एनो। मैकेनिज्म क्या है, कन्वर्ट है ना, इट विल कोवेलेंटली बाइंड एंड डैमेज द पैरासाइटिक प्रोटीन। ये क्या है कि दिस इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टिव मॉलिक्यूल, एक कार्बन सेंटर्ड मॉलिक्यूल which is generated by cleavage of endoperoxide bridge in the artemisinin। यहाँ पे endoperoxide bridge देखो आप, endoperoxide bridge, cleavage of this endoperoxide bridge and reactive radical generation that react with the parasitic protein, covalently bind with the parasitic protein in the artemisinin. It is catalyzed intraparasitic heme ion, and that will damage the parasite. They are mainly schizonticides, effective against the Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. They are useful in the cerebral malaria. So only drug useful in the cerebral malaria. Only drug useful in the cerebral malaria. Adverse drug reaction क्या है, common GIT symptoms रहेंगे, nausea, vomiting, diarrhea. High dose can cause ECG abnormalities, bradycardia, first degree of EV block, and transient increase the HGOT, serum, glutamate, oxaloacetate, transaminase. Atavacol act by selectively interfering with the mitochondrial electron transport chain of the malarial parasite। है ना, एटोवाकोन क्या करता है कि इट विल टारगेट द माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी। हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोक्सीनैप्थोक्विनोन कंपाउंड, क्या है, नैप्थोक्विनोन डेरिवेटिव। एटोवाकोन प्लस प्रोगोनिल कॉम्बिनेशन is synergistic used for the prophylaxis against the Plasmodium falciparum and multi-drug resistant malaria. Also has a potency and activity against the Plasmodium carinii, Plasmodia and T. gonadi, है ना। अदर ड्रग्स कौन से, इसमें सल्फोनामाइड्स यूज कर सकते हैं, सल्फोडोक्सिन प्लस पायरामिथामाइन। डॉक्साइक्लिन आल्सो इफेक्टिव इन द Plasmodium falciparum, बट स्लो एक्शन एंड पोटेंट फ्लोरोसेंट होता है। प्राइमरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स भी को है ना। बाद में लास्ट में आता है सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया तो प्रोनाउंस्ड सीएनएस सिम्टम्स विद हाई मॉर्टिलिटी, मतलब ये सेरेब्रल मलेरिया जिसको हो गया तो वो ज़्यादा, मतलब उसका विकेट पड़ता है, मर जाता है, मतलब मॉर्टिलिटी हाई। नीड्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग गुड नर्सिंग केयर एंड इन दैट इंट्रावेनस क्वीनिन इज यूज्ड, और अल्टरनेटिवली आर्टिमिथर और आर्टिथर कैन बी यूज्ड। That can result in a severe fatal hypoglycemia, which can be corrected with the somatostatin analog octreotide. Because जब cerebral malaria है जो इंट्रावेनस ग्लूकोज को रिस्पॉन्ड नहीं करता, hypoglycemia is because of the inhibition of beta cells by quinine। जब भी क्विनिन देना है आपको तो उसको पहले ये ऑक्टेरोटाइड देना है, क्यों, इट इज सोमेटोस्टैटिन एनालॉग, वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन। दिस विल एंड योर ड्रग यूज्ड इन द मलेरिया।